Okay, today the lesson. Okay, class. We are going to start our topic today. Today we will study about the modifiers and sentence types. First of all, we will study about the modifiers. What are the modifiers? Modifiers क्या होते हैं? Modifiers are the part of the sentences. Sentence का वो part होते हैं that modify or describe the clause. किसी भी clause के अंदर modifier वो होता है जो उस clause के पार्ट्स को मॉडिफाई करता है फिर उसको डिस्क्राइब करता है मॉडिफायर्स हमारे पास किसी भी वर्ड से पहले भी आ सकते हैं और उस वर्ड के बाद भी यूज हो सकते हैं जो वर्ड से पहले यूज मॉडिफायर यूज होते हैं उनको हम प्री मॉडिफायर कहते हैं और जो किसी वर्ड के बाद यूज होंगे उनको हम पोस्ट मॉडिफायर कहेंगे मॉडिफायर दैट मॉडिफाइज एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन अदर वर्ड इन द सेंटेंस किसी भी सेंटेंस में एक वर्ड के बारे में अगर कोई दूसरा वर्ड उस पहले वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो तो उस वर्ड को हम मॉडिफायर कहेंगे इन द सेम सेंटेंस एक ही सेंटेंस में अगर एक वर्ड one word that gives information about an other word and that word will known as modifier for example I am going to cafe for vegetarian burger. Here we can only write a burger, but the word vegetarian here the word used vegetarian as a modifier. It is giving the information about the burger or you can say it is modifying the word. It is giving us the information about burger that which burger is the, for which burger we are going for we are going to buy. Okay, so this vegetarian word I am going to cafe for a vegetarian burger. So this word vegetarian is a modifier and it will be a post modifier or pre modifier because it is using before a word burger. So we will say it we will say it pre modifier. टाइप्स ऑफ मॉडिफायर यहाँ बताई गई हुई है कि एडजेक्टिव मॉडिफायर भी होते हैं कि किसी एडजेक्टिव से पहले अगर मॉडिफायर लगा देंगे तो वो एडजेक्टिव मॉडिफायर हो जाएगा एडवर्ब मॉडिफायर होते हैं किसी भी एडवर्ब से पहले अगर हम कोई मॉडिफायर हम पुट कर देंगे वो एडवर्ब मॉडिफायर होगा प्रपोजिशनल फ्रेजेस भी होती हैं अपोजिट्स भी होते हैं पॉजिटिव्स भी होते हैं नंबर फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव मॉडिफायर्स क्या होते हैं एडजेक्टिव मॉडिफायर्स मॉडिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करते हैं वो एडजेक्टिव मॉडिफायर्स होते हैं बाय प्रोवाइडिंग और गिविंग इंफॉर्मेशन टू गिव इट और टू मॉडिफाई इट या फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है या फिर उसको मॉडिफाई करता है और मोर स्पेसिफिक मीनिंग और गिव इट अ मोर स्पेसिफिक मीनिंग किसको अ नाउन और प्रोनाउन को अगर कोई वर्ड उनसे पहले या उनके बाद लगेगा टू गिव इट और प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन और टू मॉडिफाई इट तो हम उसको एडजेक्टिव मॉडिफायर कहेंगे फॉर एग्जाम्पल आमना इज लुकिंग गॉर्जियस यहाँ पे तो दूसरी एग्जाम्पल दी हुई है लेकिन आमना इज लुकिंग गॉर्जियस so the word gorgeous is a modifier. Here is another example given. This is an aggressive team. This is an aggressive team. Here an aggressive is adjective. She is she has a terrific attitude. Okay, these all are given the examples of adjective modifiers. It is a beautiful sculpture. Next, here is given an exercise. Next, adverb modifier. They modify the verbs or give meaning to the verbs.
किसी भी वर्ब को अगर कोई वर्ड मॉडिफाई कर रहा हो एक ही सेंटेंस में, अगर वर्ब को कोई वर्ड मॉडिफाई कर रहा हो तो हम उसको एडवर्ब मॉडिफायर कहेंगे इन अ सेम सेंटेंस। ये इसका मेजर केस होता है कि ये सेम सेंटेंस के अंदर मॉडिफायर्स हमेशा सेम सेंटेंस में होंगे। एडवर्ब मॉडिफायर, here are some examples given. The doctor later spoke to the press. Here the later is the adverb of time. ये adverb of manner, adverb of time, ये सारी adverb की kinds हैं और ये इसके examples दी गई हैं फिर adverb modifiers की। Next is appositive modifiers. They are the noun phrases that follow and describe other nouns. ये क्या होते हैं? वो तो words होते थे, they are noun phrases. Appositive modifiers हमारे पास noun phrases होती हैं that follow and describe other noun. किसी भी दूसरे noun को follow करी होती है या उसके बारे में more information दे रही होती हैं या फिर तो वो उसको describe कर रही होती हैं। For example, the child intelligent and strong. ये child intelligent and strong, here intelligent and strong is the appositive modifier because it is giving information about the noun child. Look after her parents. The child intelligent and strong. अगर intelligent और strong हम ना भी लगाते तो ये sentence complete है. But this is a modifier and this is a noun phrase. Intelligent and strong. The child intelligent and strong look after her parents. This is an example of a positive modifier. Next is prepositional modifier. They are directions or relationship words. ये रिलेशनशिप वर्ड्स होते हैं प्रपोजिशन में। प्रपोजिशनल फ्रेज में हमें प्रपोजिशन से पता लग जाता है कि प्रपोजिशंस हमारे पास कौन कौन सी होती है। इन हो गई, एट हो गई, ऑन हो गई, दीज ऑल आर प्रपोजिशंस। और प्रपोजिशनल मॉडिफायर्स दे आर डायरेक्शंस और रिलेशनशिप वर्ड्स और they are directions or relationship words. Here the examples are given. The man wrote his novel at a seaside hotel. At a seaside hotel, this is the prepositional modifier. Sentence की types को discuss किया गया है. Here are the four types. Simple. What are the simple sentences? What are the compound, complex, and compound complex? First of all, we will study about the simple sentences. Simple sentences क्या होते हैं? जो कि इन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज के मतलब वो एक सेंटेंस, दैट सेंटेंस इज गिविंग अस फुल इंफॉर्मेशन, वो हमें पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है और बात समझ आ रही होती है। दिस इज द सिंपल सेंटेंस और द इंडिपेंडेंट क्लॉज ओनली। Here are the examples of simple sentences. For example, Bob went to the store. Bob and Sue went to the store. These are all are the simple sentences because they are independent. They don't need another sentence for completing their meaning. Okay. Next is compound sentences. What are the compound sentences? Two or more independent clause होती है. Compound sentence consist of independent. Dependent clause कौन सी होती है? जो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड कर रही है, दूसरी क्लॉज पे डिपेंड कर रही है, वो इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट होती है। और इंडिपेंडेंट, दे डोंट नीड अदर क्लॉज टू फुलफिल देयर मीनिंग। ओके, तो कंपाउंड सेंटेंसेस में देर आर टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज के they don't need another sentence for giving their full meaning. Okay, and they are joined by the coordinating conjunctions.
फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हमारे पास होते क्या है, कंजक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, कंजक्शंस हमारे पास लिंक वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होती हैं, क्लॉज भी हो सकती हैं, बट मेनली यहाँ पर लिंक वर्ड्स हमारे पास कंजक्शंस होते हैं जो कि दो सेंटेंसेस को मीन्स दो क्लॉज को आपस में लिंक कर रहे हो, दे आर द लिंक वर्ड्स होती हैं. अब कंपाउंड सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होती हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हमारे पास होती हैं एंड, बट, और, नॉर, फॉर. दीज ऑल आर द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. एंड कोऑर्डिनेटिंग conjunctions and coordinating conjunctions plus independent clause are used in the compound sentences. In compound sentences, both the clauses are independent. Means ke they both will give us the meaning. For example, okay, Bob went to the store. This is first clause, and Sue went to the office. This is the second one. These two they both are independent. Okay, you can see that they both are independent. अगर सिर्फ हम पहली क्लॉज देखें, बॉब वेंट टू द स्टोर, दिस इज गिविंग अस अ फुल मीनिंग कि हमें किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है इसके साथ. एंड नेक्स्ट, सी यू वेंट टू द ऑफिस, ये सेंटेंस में फुल मीनिंग दे रहा है, बट दे बोथ सेंटेंसेस आर जॉइंड बाय द कंजक्शन एंड. Here and as the coordinating or independent coordinating conjunction, and as the coordinating conjunction. And these type of sentences are called the compound sentences in which two clauses in which two independent clauses are joined by two independent clauses जो हैं वो join की गई हो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से. ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आपको याद करनी पड़ेंगी एंड, बट, और, नॉर, सो, येट, फॉर, सो भी इसी में आती है. नेक्स्ट चलते हैं हम complex sentences. What are the complex sentences? Complex sentences में क्या होता है कि one independent clause